Good evening and welcome. You're watching Left, Right and Center with me, Sanket Upadhyay. Two very important stories that we are tracking. Well, gas prices, petrol, diesel, milk, every price has gone up. And our deduction from the manner in which it has happened is that has price rise now become a post-election ritual? That till such time that you have a crucial election, stop it. And the moment the elections are over, suddenly market forces take over. And how long is this going to work? Also, this is just perhaps the beginning of petrol and diesel prices. Is this the beginning of a cycle where it is going to increase sharply? Also, what about the time when crude oil prices were low? Why was the benefit not passed on then? Very important discussion will begin in just a short moment. Also on the show in about 10 minutes from now, a 10-minute food delivery mechanism by these food delivery apps. We are going to carry out a risk versus reward debate. You see, I may be very happy that I've ordered food, 10 minutes, it's here. But imagine the risk that someone is taking to make sure that you get it in 10 minutes. Is it really, really worth it? The risk versus reward debate in just a short moment from now. For our discussion number one, I would like to introduce our two guests, Sangam Lal Gupta, Lok Sabha MP of the Bharatiya Janata Party, and Supriya Shunait, National Spokesperson of the Congress Party. Before I come to you, let's first quickly tell you what all has happened. Well, petrol is now costlier by 76 to 84 paise per litre. Diesel costlier by 76 to 86 paise per litre. These prices have increased after 137 days and particularly once the election results are out. Price of petrol and diesel have risen after the 4th of November. Prices could go up further also is what we are learning. Crude oil price is likely to rise in the international market and that's the primary driver of this increase. The crude oil right now is at $110 per barrel. Beginning of November, crude oil was about $81 to $82 a barrel. Now, domestic LPG cylinder is 50 rupees costlier. Price rise after almost 5 months. Again, time to the elections. Last price rise was on the 6th of October 2021. In Delhi, domestic gas cylinders are now for 949 rupees. Let's now talk about cooking oil, which is costlier by 25 to 30% in a month. Amul milk, costlier by 2 rupees from the 1st of March. Mother Dairy and other companies have also increased their price. Nestle's Maggi, milk, coffee, Hindustan Unilever's coffee, Taj Mahal, Brook Bond, tea, all prices expected to go up if they haven't gone up already. So, this has led to an uproar. Jaya Bachchan of the Samajwadi Party says BJP raised prices after elections, Akhilesh had warned. Mallikarjun Kharge of the Congress Party says government will take 10,000 crores from the public. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party says BJP was just waiting for the election results. So, Sangam Lal Gupta, I want to now come to you and ask you this question. अगर मार्केट फोर्सेस नियंत्रित करते हैं इन दामों को, तो ये इलेक्शन के टाइम पे मार्केट फोर्सेस कहां चले जाते हैं? इलेक्शन के रिजल्ट की हमने बंगाल में देखा यही होते हुए अब यहां पर जी संगम जी, आपका जवाब। आवाज आ रही है हमारी? जी, आवाज आ रही है जी। मेरा आवाज आई आपको? हाँ जी, हाँ मेरा आवाज आ रही है, बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दाम बढ़ना जो है ये इलेक्शन के एकदम बाद ही क्यों होता है? बंगाल में भी यही हुआ, अभी ये उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड के चुनाव हुए, उसके बाद भी होना चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए। उपाध्याय जी बोल रहे हैं ना? जी, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम 95 रुपया, जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 109 रुपए 98 पैसे है, 107 रुपए है। वहां आपको इसकी महंगाई नहीं दिख रही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 95 रुपए है। जी गुप्ता जी, आपका ये लॉजिक एकदम नहीं, यू आर रेजिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। आप टैक्स के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो और राज्यों में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरी बात ये है कि आप कितने में जो मूल दाम है पेट्रोल और डीजल का वो कितना है। देखिए, इस पर तो रोक लगा दी थी ना, या तो मार्केट फोर्सेस हैं तो आप मार्केट फोर्सेस को चलते रहने देते। ये चुनाव के बाद क्यों एक्टिवेट होते हैं आपके मार्केट फोर्सेस? नहीं, देखिए
नहीं, देखिए अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी से बात कर 25% डिस्काउंट पर पेट्रोल आयात करने का निर्णय लिया है। यह देश के हित में है और महंगाई को कम करने वाला निर्णय है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल और, इससे पहले मैं सुप्रिया श्रीनेट के पास जाऊं, संगम लाल गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि जब धड़ाधड़ मुनाफा कमा रही थी ये पेट्रोल कंपनीज और इसके अलावा सरकार, केंद्र सरकार जब टैक्स वसूल रही थी और बहुत भारी भरकम टैक्स में वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार को पिछले 2 साल में, खासतौर से पिछले 1 साल में, तो आपको नहीं लगता है कि वो बर्डन, जब आपका क्रूड ऑयल का दाम कम था, वो आप लोगों के लिए भी दाम कम कर सकते थे? और जब इतना मुनाफा कमाया है तो अब आप अपनी मजबूरियां मत गिनाइए, अब दाम रहने दीजिए वहीं। नहीं, मैं आपसे जवाहरलाल नेहरू जी के समय में कार का दाम जो था वह क्या इंदिरा गांधी के समय भी उतना ही था क्या? भाई देखिए, वो आपकी बात राजीव गांधी के समय में जो सामान जिस दाम में मिलते थे, समझ गया गुप्ता वह जी, सामान क्या मनमोहन सिंह के दौरान भी वही भाव मिलता था क्या? अच्छा चलिए, अगर ये बात कर लें, आज $110 प्रति बैरल है। 2012-13 में भी लगभग इतना ही था, $120 प्रति बैरल था, और तब तेल का दाम जो है वो 75-76 रुपए था, और तब बीजेपी के ही लोग धरने पे बैठते थे कि बहुत ज्यादा है। देखिए, आज हमारी सरकार पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करके रखी है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने हाल ही में कहा कि महंगाई दर इस वर्ष 6% के आसपास होगी, जबकि मनमोहन सिंह के राज में यही महंगाई दर क्या थी, आप ही बताइए। Supriya Shinit, I want to come to you now. So the logic that has been given by Mr. Gupta, 10.5% के ऊपर था। एक सेकंड, Supriya Shinit, I want to come to you now. So the logic that is being given is that we have controlled inflation, we have controlled price rise, and thus the Aam Aadmi is not feeling the pinch that he used to earlier in the UPA rule. That's the logic being given. Your response? मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहना चाहती हूं कि बीजेपी प्रवक्ता और सांसद महोदय के सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया, तो जो खर्रों से पढ़ रहे हैं उससे बात नहीं बनेगी। बात आपको मैं 2-4 बातें सुनकर बता देती हूं, आपके व्यूअर्स के लिए भी और आपके लिए भी, और मैं जानबूझकर हिंदी बोल रही हूं, मातृभाषा है, आप भी हिंदी में बात करें, मैं भी हिंदी में जवाब दूंगी। 2014 में कच्चे तेल का दाम $108 प्रति बैरल था, लेकिन पेट्रोल का दाम देश में 71 रुपए था और डीजल का दाम 55 रुपए था। आज देश में 108 रुपए कच्चे तेल का दाम हुआ है, तो पेट्रोल 96 के पार है और डीजल 88 रुपए पे बिक रहा है। ये मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, फार फ्लंग एरियाज में और भी महंगा है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए जो होती थी उसको बढ़ा के 27 रुपए से ऊपर कर दी, और जो 3.5 रुपए डीजल पे होती थी प्रति लीटर, वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 18 रुपए 34 पैसे कर दी। अब ये बोलेंगे कि नहीं इससे क्या फायदा होता है, हम स्टेट्स को देते हैं। इसका सच भी मैं 1 मिनट में आपको बता देती हूं। 2014 में प्रति लीटर डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी 2 रुपए 43 पैसे और स्टेट्स को, राज्य को दिए जाते थे 1 रुपए 14 पैसे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है 31 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है 74 पैसा। पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब 32 रुपए रख रही है, पहले 6 रुपए रखती थी, 3 रुपए राज्यों को मिलते थे, अब 57 पैसा राज्यों को मिल रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि लास्ट 3 सालों में कच्चे तेल का एवरेज दाम मोदी सरकार के लिए $60 प्रति बैरल पर रहा, $19 तक प्रति बैरल पर गया। क्या आपने दाम घटाए? आपने दाम नहीं घटाए। चलिए कोई बात नहीं, महंगाई आपको लगता है महंगाई नियंत्रित है, इसके बारे में मैं 2 सेकंड में जवाब दे देती हूं। खुदरा महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन 6% के पार है, जो आरबीआई की कंफर्ट जोन से ऊपर है, और होलसेल इन्फ्लेशन 13% से ऊपर है। आज खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि रियल एस्टेट लोगों ने बोल दिया है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, उनकी मार्जिन नहीं आ पा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शशिकांत दास नहीं है, शक्तिकांत दास है। और क्योंकि आप महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं और महंगाई वाकई में डायन है, आपके लिए जरूर डार्लिंग उल्टी लगती है,
महंगाई की दर और ग्रोथ का कोरिलेशन होता है सांसद महोदय, और महंगाई की दर भले ज्यादा रही हो यूपीए में, ग्रोथ की दर भी ज्यादा थी। आपकी ग्रोथ नेगेटिव में है और महंगाई 6% है। इस देश के 15 करोड़ लोगों की आय आधी हो गई है। उनकी कमर जल्दी से तोड़ आप संगम लाल महंगाई गुप्ता से जी, है। आपका जवाब। उनकी महंगाई से आप कमर तोड़, जैसे संसद में कहा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ। देश में कोरोना काल का संकट आया, पूरी दुनिया में, देश में भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, और उसी का नतीजा है कि हम 4 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और कांग्रेस की जमानत तक नहीं बची है। एक एक जगह 200-200, 400-400 वोट पाए हुए हैं लोग। मैं एक मिनट, चलिए, लेकिन उनको महंगाई पर बात करने का हक तो है, भले ही जमानत जब्त हो गई हो। नहीं संकेत जी, मैं इसका जवाब दे देती हूं। भाजपा को लगता है, और भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बिगड़ैल लोगों को शायद अहंकार में यह लगता है कि वो अपने इलेक्शन की बात करके निकल जाएंगे। नहीं महोदय, आपको जरूर 3-3.5 करोड़ से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मिले, लेकिन 5 करोड़ लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट किया है। वो बेरोजगारी और महंगाई पर वोट किया है, ये याद रखिएगा। डावाडोल है स्थिति आपकी, आप जितना भी उसको कर लीजिए। 3.5 करोड़ से ऊपर पॉइंट है। 2014 में पहली बार हमारी सरकार बनी है, और उसके बाद 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं। लायक आप हैं, आप माननीय मोदी जी की बातें करिए। आप पेट्रोल डीजल की चर्चा में कहां आ गए सर? ये टेक्निकल बातें हैं, इन टेक्निकल बातों को टेक्निकल जवाब दीजिए। और अगर ऐसा था, छोटी सी चीज, net profit. One moment. As I'm running out of time, I just want to say that the net profit of oil and gas PSUs in FY 2017 was 64,333 crores. 2018 was 69,000. 2019 again 69,000. In 2020 came down to 26,000. But in the last financial year, in 2021, it rose to 74,720, which means that these companies have made remarkable profits. No, Sanket. What the government has also done is the government has brought down fuel subsidy from 1,42,000 crore. It is down to 5,000 crore. So the government knows it will not pay subsidy to ring fence to protect the common man. आम आदमी के लिए ही फ्यूल सब्सिडी थी। आपने फ्यूल सब्सिडी को 5,000 करोड़ रुपए कर दिया, जो 1,42,000 करोड़ होती थी। Okay. इसका जवाब my point is how long will this continue, and where exactly is this price rise going to stop? Because it has happened after 137 days. How much is it going to rise by? और संकेत, अगर ऐसा था तो चुनाव के दौरान क्यों बंद था सब कुछ? Okay. Thank you very much to the two of you. We're moving on to our discussion number 2, and that is this 10-minute delivery of food. And I have with me, I would like to introduce Lok Sabha MP of the Congress Party, Mr. Karti Chidambaram. Mr. Chidambaram, good evening. You made an intervention also in Parliament about this whole concept of 10-minute food delivery. What is your observation? What is your reservation? What is your basic contention? See, I spoke about this last week in Parliament, well before this particular company's 10-minute, program which is announced today or yesterday. There are 15 million people who work in the gig economy in India. They don't have a formal employer-employee relationship with their companies. They work very long hours. There have been many studies by independent agencies which say that these people who provide these services don't have very good conditions of work, and they're overworked and they suffer a lot of, hardships, and they don't have any social security. So that is the issue I highlighted last week when I spoke in the 0 hour very briefly. Subsequently, a particular company, which is an app-based delivery company, has said that they will now start delivering food or groceries, whatever it is, within 10 minutes. This is only going to exacerbate the situation. As it is, the delivery personnel are under tremendous pressure. This will only lead to more pressure, which will lead to, endangering their life and limb, not necessarily only their life and limb, but also others on the road, because they're under tremendous pressure, and this forces them to, drive negligently and rashly. And there have been many instances where people have lost lives. Even in Delhi, there has been an executive of Zomato, Salil Tripathi, who passed away. And there is not much of a social security net for them. There is not much compensation for them.
they don't have much of a bargaining power vis-a-vis these VC-fueled companies which are worth billions. They don't have any organized structure to negotiate with these companies for terms of employment. They're technically not employed or terms of service. And they don't have any kind of social security. And further, they're using their private personal vehicles for commercial delivery. So this is also a good excuse for insurance companies to turn down their claims. So there are many issues. And we as a society, I understand that technology is a great enabler. It is giving newer and newer opportunities. It is fueling the economy. But as a society, we must also adapt to those changes and give protection. But Mr. Chidambaram, who don't have the necessary bargaining correct. tools. I agree with you. That's all. The safety. That's the only. Have you heard? That's my motivation. What's your? You must have heard what the chief of Zomato, the clarification that he has given, that this is only going to be hyper local. I am not concerned with particular companies or their particular marketing strategies, which they need to do to enhance their investor value or to attract new investors. I understand the VC world. I know that you need to keep on innovating. It's not enough for them to just run a business as usual. So I understand all that. But that's not my concern. My concern is much more broader. It is about the 15 million people who work in the gig economy, which is going to grow to 25 million and perhaps to 100 million if things move in the same trajectory. What is the protection they have? What is the social security they have? What are the working conditions? Most important. I mean, what is that is my only motivation. I'm really not concerned about a company or its specific program to deliver. Perhaps if Zomato is able to deliver groceries in 10 minutes, they must be given the key to our police control room and to our ambulance services as well, so they can quickly dispatch ambulances and respond to emergency calls in police station. So I think the Home Minister of India must take note of this and immediately call the chief of Zomato to start manning the emergency response systems of India. Okay, Mr. Karthi Chidambaram, thank you very much. I guess this concern that you have raised is very, very important. Food at what cost? The risk versus reward of this innovation. Innovation is good, but at what cost? That is very important. Thank you very much, Mr. Chidambaram, for joining us. We have Kanish Gaur, who is invested in Zomato, is the founder of India Future Foundation, and Faisal, a delivery boy. We'll hear from him firsthand on what the practical problem is. Now, Kanish, before I come to you, Faisal, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 10 मिनट की बात कही जा रही है, इसमें तमाम तर्क दिए गए हैं, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट हैज बीन गिवन कि भाई एकदम लोकल होगा, पहले से ही तैयार खाने के आइटम होंगे और वो 1-2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ही होगा, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी जितना हम मान के चल रहे हैं. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये टाइम पर डिलीवर करने का जो प्रेशर होता है उसको किस तरीके से झेलते हैं डिलीवरी बॉय. जैसे मैं जानता हूं पिज्जा के टाइम पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे वार्ड्स थे अस्पतालों में जहां पर आपको लाइन से वो पिज्जा डिलीवरी वाले, किसी का हाथ टूटा है, किसी की टांग टूटी है, सब इलाज करा रहे थे अपने पैसे से. वो भी सर मैं यही बताना चाहूंगा, 10 मिनट बहुत कम है. 10 मिनट में हमें जाना भी होता है, फिर वहाँ पैकेजिंग वगैरह होती है, उसमें टाइम लगता है. कस्टमर तो 10 मिनट जब से अकाउंट शुरू कर देता है जब वो ऑर्डर करता है. और फिर कई जगह रेड लाइट वगैरह भी होती है, तो रेड लाइट जंप वगैरह और गाड़ी भी तेज चलानी पड़ती है. सर दिक्कत है 10 मिनट. जी, Kanishk, how would you respond? You see, the apprehensions are many. I mean, we are all for innovation, but surely someone can wait. Even if I'm really, really hungry, I wouldn't want someone to break his bones to get my food on time. I can wait 15, 20 minutes or 30 minutes perhaps. So, Sanket, if you go through the explanation which the CEO of Zomato has given, he's explained that this is a new model which he's building, and this is not the first time. If you look at Zepto was the first company in India which launched this 10-minute delivery model, and this has been done globally as well. So if you go to Turkey, there is a company called as Getir which is already offering a similar delivery. If you go to Germany, Gorillas is another company which does this. Dija is another company in Britain who is already doing it. Uber Eats has partnered with Carrefour to deliver on a similar model in US. So this is hyper local commerce which is being built up, and the CEO of Zomato has told that they are going to build a new model. In fact, build up workstations for delivery. So this is not for ordinary delivery, but for
aspects which people want. So if you want to offer something which is widely popular, they will try and build out that model. If you look out through the explanation, it is clearly explained they are looking at delivering this within 1 to 2 kilometers of range, which will approximately take 3 to 6 minutes. And the average time per kilometer will be 20 kilometers per hour. I don't think so, which is going to be a big risk. And this is going to be for fast selling delivery items. So the normal preparation for food is going to be between 2 to 4 minutes. See, there is one model which you create which is great theoretically. And then there are practical difficulties which are very unique to India. You will not face these problems in other countries, right? Given these problems, also the social security net, Mr. Karthi Chidambaram just highlighted this fact. So if you look at, who takes care of these people? Yeah, so they are promising insurance, right, for any kind of accident that happens. They're also promising that there will not be any late fee charges if the food is delivered later than 10 minutes. Neither will the delivery person be informed whether it is a 10-minute delivery or a 30-minute delivery. So all that has been specified explicitly. But then, Mr. Gaur, it carries no meaning then. No, it carries a meaning because it is for aspects which are much in demand. So if you want to order something which is much in demand and it is close to your house, 1 to 2 kilometers, this is the new model. And the world has evolved to it. If Zomato would have not done this, other companies would have also done this. And Zomato is not the first company. There is already other companies like Zepto. There is Instamart from Swiggy, which are already offering this food. So I don't understand why we are specifically targeting Zomato. No, nobody is targeting. First of all, on this debate, Mr. Gaur, the idea is not to target, but to understand that so have we done this risk versus reward SWOT analysis well? Because frankly, 30 minutes is fine, but 10 minutes, I don't know what this model is. 10 minutes is going to be a little bit of a stretch on the person who's delivering. You may have food ready, but I'm talking about delivery. Very quickly, Faisal, I want to come back to you. आपको लगता है कि बहुत आश्वासन चाहिए होगा इससे पहले कि आप इस तरीके की कोई चीज करें? मैं आपसे वो डिफिकल्टीज जानना चाहता हूं. जैसे अभी का जो मॉडल है उसमें 30 मिनट तक में आप डिलीवर करते हैं. इसमें अगर कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो ऐसे में रिस्पॉन्स क्या होता है इन कंपनीज का? ऐसे में सर एज अ डिलीवरी बॉय कोशिश ही कर सकता है. कोई भी जो डिलीवरी बॉय है उसे अपनी की तरफ से कोशिश कर सकता है. बट अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो या कुछ होता है तो फिर कंपनी मुझे नहीं लगता कि कुछ करती है डिलीवरी बॉय के लिए हमारे लिए. How would you respond, Mr. Gaur? That's the point. You may claim 1,000 things, but what if a person meets with an accident on duty? What's the safety net for them to do this, to enter into this enterprise? You call them delivery partners. So if you look at what the CEO of Zomato has explained, he has specifically characterized that the company is going to create a new business model and they're going to come out with safety guidelines and standard operating procedures on how delivery can be ensured within 10 minutes. This will include training the drivers, also creating awareness and telling them how their safety will be covered through insurance and accidental schemes. The point over here is not guidelines. So, Sanket, an accident is called an accident because it is an accident, right? So whatever SOP may be in place, if an accident happens, then what is the responsibility of this company as you undertake this enterprise of 10 minutes? So the responsibility of the company is to provide life insurance cover. The responsibility of the company is to provide accidental insurance. That's what they can do as a partner. And there are going to be multiple new models which are getting created, and these are certain risks which the company will try and cover. I think I've run out of time, but it's healthy for us. Sadly, even this debate was for 10 minutes only, but it should be important for us to debate this for a little more than 10 minutes as you undertake this enterprise of delivering food. I mean, I know this craving, this madness, let's quickly have something to eat, but I don't want it over someone else's misery or the misery of a delivery partner. Let's just hope that does not happen. Mr. Gaur as well as Faisal, thank you very much. We'll order
something from Zomato or Swiggy very quickly, and I think I can wait for half an hour or 40 minutes. Thank you very much. Some comments on coup also. Gaurav writes and he says, how is the government safeguarding the interests of the common man now? Of course, this is about the petrol price hike. Then Atul also says the hike in petrol and diesel prices automatically affects all the other essential household goods. That brings us to the end of this broadcast of Left, Right and Centre. News continues on the other side. Stay.